Hi everyone, my name is Shibasankar Hazra with you in the StudyIQ platform. So recently, उत्तराखंड रे जदि हम देखिबा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रे जो लैंडस्लाइड हेछि जो मड फ्लो हेछि जो डेब्रिज फ्लो हेछि दिस इज जस्ट एन क्लाइमेट थ्रेट एंड दिस इज जस्ट एन इवेंट आमे कहिबा जोटा कि गोटे इवेंट बा आमे कहबा वन ऑफ द इवेंट जोटा हमकु जणाउची कि आगु को एई भले आगु को बहुत हबार अछि एंड तारी ऊपर आज मु डिस्कस करिबी आज गोटे शॉर्ट वीडियोस रहइबो बेसी मु समय नेबी नाही जो डिस्कस करबा एंड दिस इज द इमेज देखि परिबा आपण माने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रे जो प्रकार जो भयावह लैंडस्लाइड हेसी and here you can see after the landslide how the water is flowing and the this is the mud, you can see the mud here and the sediment is deposited and number of homestay, number of hotels are been buried, they are completely देखि परिबा आपण माने right a buried पूरा buried हे जे and these are the debris, the security personnel, the NDRF, SDRF सब प्रकार लोक लागिचंती एथरो उद्धार करे पे लोक मानन को हम कहि परिबा सिचुएशन एते भयावह कहि कि हमें कहबा ये जो फ्लो रही आपको हमें सेटा डिटेल डिस्कशन करबा तो ये कोन अछि दैट इज धरोली एरिया रे हिच उत्तराखंड रे कोठी लैंडस्लाइड हिच धरोली एरिया को रीजन रे उत्तरकाशी रीजन रे हिच हमें कहबा कोन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जो ए प्रकार जो भयावह जो लैंडस्लाइड डेब्रिस फ्लो मड फ्लो जो हमको देखा मिली छि एटा गोटे इंडिकेटर नुह कि कोन ये गोटे क्लाइमेट्स रा हमें कहबा के चेंज रो इंडिकेटर आपन कहि परबा और क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर गोटे थ्रेट कहि परबा कि दिस इज नॉट जस्ट ए सिंगल आगु को एमिति बहुत हबार मध्य रहिछि देन आरो रीजन कोन कि व्हाई उत्तराखंड जदि मु किछि स्टैटिस्टिक्स आपन मन को देखैबी मु आगे अच्छा ये रीजन को मु देखे जो धरली रीजन ये जो धरली रीजन देखि परबे दिस इज द ओरिजिन प्लेस हाउ दिस वैली रे केमति मड फ्लो स्टार्ट हला इटू ऑल ऑफ ए सडन बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट हेवी रेनफॉल जोगु cloud burst because of the cloud burst in the region that we call Khir Ganga. So the origin place of this Khir Ganga, right, and this is the catchment area of the Khir Ganga. So again I will repeat, ये जो landslide टा हेची कोठी हेची Khir Ganga रो catchment area. That means this catchment area of Khir Ganga, ये जो catchment area रही suddenly started to what flow down. ये कौन कहला flow down कहला. Suddenly it started to what flow down. ये कौन कहला फ्लो डाउन कले नाइट्स व्हाट फ्लो डाउन काहे की फ्लो डाउन कला कोन एमिति हेई गला कि ये रीजन रे एंड दिस इज द वैली रीजन एटा होची आपनकर बडर वैली टा हम कहबा दिस इज लार्ज वैली एंड दिस वन इज अ स्मॉल वैली ये होची गोटे हम कहबा स्मॉल वैली जोथर की सेटलमेंट एते डेवलप हेई नाही बट ये जो वैली टा हेची दिस इज आपनकर लार्ज वैली ये होची आपनकर लार्ज वैली इन दिस लार्ज वैली हम कहबा the settlement has developed एथि पई कारण जो टूरिज्म बूस्ट होची टूरिज्म जो हमें ट्रेंड करूची द ट्रेंडिंग ऑफ टूरिज्म and the thoroughly destruction I would say what thoroughly destruction trend of tourism ये जो this kinds of linkages जो यदि हम देखा the linkages is there and this Khir Ganga suddenly it's collapsed and all the sediments started to flow down to this what thoroughly village को आसिक पहुँचला and that verified the at least कहउछि कि more than 15 home stays मतलब खत्म हो जाइछि बहुत सारा hotels खत्म हो जाइछि so this is the diagram you can see from the satellite image जोटा में इसरो रो रहिछि हम different website रे आपन मने मध्ये पाई परिबे and this is the image के how it happens how from where it exactly started हैला this is the point काहे कि because of heavy what heavy rainfall monsoon चलीछि heavy rainfall cloud burst हम कहबा and ये गोटी लैंडस्लाइड नो उत्तराखंड रे प्रत्येक दिन जदि हम हिसाब करियो more than hundreds of landslides small and large is taking place and खाली monsoon season रे जदि हम देखिबा last year more than हम कहबा 1500 landslides took place that could be तो प्रत्येक वर्ष जोटा के मेजर हम कहबा so that could be 1500 to 15000 भी हेई पारे सेतर किछि गलत नहीं तो उत्तराखंड जदि हम कहबा that is largely susceptible तो ये जो डायग्राम्स आपन देखि परछे जोटा क्लाउड बर्स्ट हम कहबा राइट क्लियरेंस हमें एनएच वगैरह रहिछि ये डायग्राम्स हमको हमके देखिया को मिली थाए जा भी अगेन ये डिस्ट्रक्शन आपन मन देखि परबे ये जो विलेज रहिछि पूरा देखंदु घर सब केमति बुडी जाइछि हम कहबा पंखरे पोती ही जाइछि एंड दिस इज द रीजन उत्तराखंड रे हम कहबा ये भयावह जो आसीछि उत्तरकाशी जो धरोली देखिछि धाकुम कहउछि धरोली डिस्ट्रक्शन एंड
जो ये जो कीवर्ड गुड़ा को हमको मथे लेखा को पड़ियो पड़ो आंसर है नाउ व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स ना स्टैटिस्टिक्स जदि मु कहिबी एठी থেকে देखंतु अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेस रिसोर्स इसरो अनुसार 12,319 लैंडस्लाइड हेची 1998 रु 2023 भितरे जो मोर देन 1100 टुक प्लेस केवल आम 2023 रही 1100 केवल 2023 ताले उत्तराखंड जदि हम देखा इटसेल्फ लगभग आम कह 13,000 ऑफ लैंडस्लाइड हेची केते वर्ष भितर हम देखा 1998 रु नेकी 2023 भितर तो अलार्म्स केवल आम 2023 रे देखा मोर देन आम कह 1100 लैंडस्लाइड हेची उत्तराखंड तेणु ये इटसेल्फ मध्य आमको जनाऊँगी कि द एक्सेलरेशन ऑफ disaster in the Uttarakhand and Himachal Pradesh last year मन पको जेतले हितला वेनाड लैंडस्लाइड कथा that was also a signal कि भाई climate is now मनीष को कहूँ कि we need to go for the climate resilient infrastructure, we need to be climate resilient infrastructure, development, economy, everything, the life must be climate resilient. तो हमको कोट ना कोटी climate साथ दवा को पड़िबो otherwise एभले सिचुएशन हमको देखिया को बारंबार मिलिबो जदि हमें क्लाइमेट को साथ न दउछे राइट एंड दैट इज व्हाई जदि हमें डिस्कस करिबा तो ये जो हिस्ट्री जदि हमें देखिबा जदि ये स्टेट उत्तराखंड रो हिस्ट्री जदि मु कहिबी आपन 1991 रो उत्तराखंड अर्थक्वेक हुए जोथरे मोर देन 700 लोक किल हुअंती 1998 रे पुणी आसीबो दैट इज मालपा लैंडस्लाइड हुए देन 2023 रे केदारनाथ फ्लड हुए जोथरे हम देखिचे मोर देन 5000 लोक देन 2021 रे चामोली फ्लड हुए पुणी हमर आबलांस मध्ये हुए आपनकर the number of आमी कहबा ये जो उत्तराखंड स्टैटिस्टिक्स नहीं कि मु आसी and these are the vulnerability of this Uttarakhand तो उत्तराखंड जो vulnerability that displays from the data that comes all from the data so suddenly ये data हमको discuss करूची then what are the reason कोन ये जो destruction then what are the reason for this destruction कोन एमिति उत्तराखंड रे होची that Uttarakhand is suffering from this disaster why Now, Uttarakhand is suffering from this disaster because of climate change. The first point is your climate change. And the second point is the cloud burst. And the third point is the intensity of the monsoon is increasing after year. The intensity of the monsoon, the cloud burst, and I would say what? That is the landslide. Suddenly, they are going hand in hand. कहीं कि आउ कौन रीजन है पर the over tourism जोटा हम कहले कि trending of tourism the carrying capacity of the hill region of Uttarakhand they are losing very fast and is a what fragile region ये होची one of the most fragile region जति हम एथरे मो डेटा फैक्ट्स आपन को देखैबी ना ये थरे कहा जाइथला कि एथरे हमरो गोटे कहा जाइछि जो मैपिंग हेतला से मैपिंग रे कहा छि कि उत्तराखंड होछि गोटे फ्रेजाइल स्लोप रछि टूरिज्म एंड अनचेक्ड डेवलपमेंट ऑन द फ्रेजाइल स्लोप सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट प्लस ये जो आमे कहछे दैट मींस क्लाउड बर्स्ट होछि गोटे रीजन टूरिज्म आपन को ओवर टूरिज्म गोटे रीजन मोनोकल्चर गोटे रीजन एंड आउ गोटे कह डिफॉरेस्टेशन होछि हिल स्टेशन अर्बनाइजेशन कथा नै जानतु आपन एंड आई वुड से व्हाट जोटा कि इकोसेंट्रिक लोक अप्रोच नौ जानते टेक्नोसेंट्रिक जो अप्रोच नौ चंती दैट इज समहाउ आई वुड से बैड सो वी नीड टू सस्टेन द एनवायरनमेंट वी नीड टू कोऑपरेट द एनवायरनमेंट फॉर द cooperative or I would say coexistence of man and environment otherwise it would be very difficult for the coexistence of the man and environment in this hilly region and the fragile region which is having number of fault and the what I would say thrust regions are there in the beneath of that तो उत्तराखंड रे बहुत सारा हमको देखा जबो तेनु करके ये रीजन रे जदी हमको उत्तराखंड रे जदी लैंडस्लाइड को हमको चेक करियर अछि ए जो एग्रीकल्चर अछि एग्रीकल्चर पैटर्न बा लैंड यूज पैटर्न को हमको कंट्रोल करियर अछि वी नीड टू कंट्रोल द ओवर टूरिज्म वी नीड टू कंट्रोल द व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वी नीड टू दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम फोकस करिया पड़िबो man and environment relation balance हवा दरकार man should not dominate the environment in this fragile condition जदि man dominate करे को लागिवो at the end of the day सेटा उल्टा ही जबो environment हमको dominate करिवे and ता द्वारा हमें loss होइबा and this would be the losses like this ये गोटे signal हमें कहिबा and this signal पर शायद कि government and the, all the हमें कहबा जेते stakeholder अछि including the individuals of Uttarakhand all the resident of these regions all the stakeholders all the government agencies एमाने समस्ते आमे कहबा hope के we will go for the better management we will go for the better understanding of the nature we will go for the better planning of the cities and the urban townscapes अब आमे कह landscape and land use change pattern जहाँ रही ताको हमें ध्यान देवा दरकार right so with this I will end the session but
Let's not forget to cooperate the climate. Let's not forget to plant the tree. Let's not forget to have the sustainable every individual livelihood and the what lifestyles. With this, I will end the session. Thank you everyone. But हाँ, परिपूर्ण बैच रो एडमिशन चली आपण माने एनरोल करंतु, बहुत बढ़िया बैच चलची, डिटेल्स रे आपन को पढ़ा जाउची. अपार्ट फ्रॉम दैट मु कहिबी कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट एंड द शेयर इट. थैंक यू एवरीवन.